This video I'm going to talk about a very important topic in organic chemistry, that is the Fürst-Plattner Rule, or it is also called as the Trans-Diaxial effect. In fact, I feel that this is probably one of the most difficult videos that I have made content wise and in terms of how to explain it to the students. So a lot of work has gone in making this particular video. So in this video we are going to understand what basically is Fürst-Plattner rule. Secondly, whenever we have these cyclohexene with epoxides or cyclohexene or various derivatives of cyclohexenes, whenever we see them, how to draw them, means what is the correct way to draw them. Secondly, we can clearly see from the example here, the attack is regioselective. For example, this X group, it is attacking this particular position here, whereas in this particular example, the halogen, it is attacking this particular site. So what is the reason for this selectivity? And this was explained by Fürst-Plattner, and he called it as a Trans-Diaxial effect. So all these things we are going to look at, and this video will include more than 20 examples. And in certain places I have also included the explanations with the help of the molecular model, where I have included certain parts of videos to explain to you guys this these regioselectivity. मुझे लगा कि that way मैं काफ़ी आसानी से आपको समझा पाऊँगा. So if you like, do share it with your friends, because I feel that this video or this particular topic needs a lot of attention from organic chemist community. So without wasting any time, let's start the video. So as I clearly said, that the Fürst-Plattner rule is nothing but it is also called the Trans-Diaxial effect. And what it basically describes, the celioselective addition of nucleophile to cyclohexene derivative. Okay, for example, this is also a kind of a cyclohexene ring. Okay, if I just consider only this ring, so this is a kind of a derivative of a cyclohexene, which is an imine. So when we treat it with sodium borohydride, the attack takes place from the hydride is delivered from the top to give you exclusively this particular product. So this is how this transformation takes place. Or we can also have an epoxide, and when you treat this particular epoxide with HCl, the regioselectivity chloride attacks this particular site from the back. So you do not see the formation of this particular product. Or you can also have the halonium ion. So when you, for example, subject this particular cyclohexene with tertiary butyl group to bromination, this is the diastereomer that you get, exclusively this particular diastereomer. So the formation of such compounds were explained by Fürst-Plattner, and he called it a rule. He gave a rule for that. So he said that whenever we have an epoxide, means cyclohexene oxides, whenever a nucleophile attacks such epoxide, so this attack is always going to take place in a manner in which both these groups, for example the X and OH, they will end up being diaxial. ठीक है, जैसे if we are starting from a normal cyclohexene or epoxide, then the attack will take place axial. उसके बाद this can interchange to give you more stable product. ठीक है, because here we are clearly talking about the unsubstituted cyclohexene epoxide. ठीक है, उस केस के अंदर trans-diaxial होगा, then the ring can easily flip to give you the di-equatorial product. ठीक है, this is what the Fürst-Plattner told. Now we are going to just divert onto something different, just to understand why the trans-diaxial attack take place. So let me just take an example of how first of all we will learn about the epoxide opening. Let us just learn about how the epoxide formation takes place. For example, if you
here I'm taking an example of trans-2-chlorocyclohexenol. So here what we have is a chloro, and this is trans. So for the trans, these are the two conformations that are possible, and we clearly know that this, the epoxide cannot form, because this oxygen, it cannot reach the sigma star orbital of this C and X. Okay? And we know for such attack to take place, both these orbitals have to be anti-periplanar to each other. So if you are not familiar with this terminology, anti-periplanar, synclinal, then I recently made a video on the torsion angle. It is very, very good video. I kindly request you to refer to this particular video in order to understand this terminology much better. Okay. So it is this particular conformer that undergoes the, formation of the epoxide. Okay. And it only happens in the case of the trans. So this is what it says. When both the groups are axial, oxygen can now attack the carbon chlorine sigma star orbital. What about the cis? In the case of the cis, in both the conformers, so here I'm talking about the cis, both the conformer, the O minus, it cannot reach the carbon chlorine sigma star orbitals in both the cases. So here we do not get the epoxide formation. So what does it tell us? What is the lesson that is learned, or what does it say about the epoxide formation? So it says that in order for the epoxide to form, so O minus should, these the sigma star orbital of oxygen should be able to reach the carbon X or carbon chlorine, carbon bromine sigma star orbitals. So they should be anti-periplanar. That means only then the epoxide formation will take place. अगर epoxide के बनने के लिए ये factor जरूरी है, so the same factor is important when the epoxide is opening as well. Okay, so for the opening of the epoxide as well, the sigma orbitals of this X, which could be chlorine minus or bromine minus, should be anti-periplanar to the carbon oxygen sigma star orbital. So it means this is the transition state via which the formation of epoxide or opening of the epoxide is taking place. Here we can clearly see that there's a clear, means they are anti-periplanar to each other. Right, this is something that we can clearly see. So it is the common transition state via which it takes place. Now let us just try and look at the structure of the cyclohexenes. So this is how the cyclohexene derivatives, they look like. They are not normal chaired structures, so they are basically a twist pot conformer they adopt. And I have simply numbered it. If there is no substitution on this cyclohexene ring, this is how they can be represented. Later on, I'm also going to show you through the molecular models. Here you can simply number it 1, 2, 3, 4, 5. So here the one thing that we have to do is always view from the top. जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, just view it from the top for the better understanding. So these carbon 4 and 5, this is axial equatorial. Now just notice this carbon number 3 and carbon number 6. So the hydrogen that is attached, which I am saying HPAX. So HPAX से मेरा मतलब है pseudo axial and इससे मेरा मतलब है pseudo equatorial. और यहाँ पर भी same चीज़, मतलब these are at directing more towards the axial position. So these are not the true axial position, but एक बार हमारा अगर आप इसको इसका रिडक्शन कर देंगे तो ये एक्शियल पोजीशन अपनी एक्वायर कर लेगा. ठीक है, एंड दिस इज द अदर कन्फॉर्मर इन विच इट विल एग्जिस्ट. ठीक है, केवल यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि जब दूसरे वाले यहाँ पर क्या है कि ये वाला मतलब ये इस तरह से पीछे जा रहा है और इस वाले केस के अंदर ये इस तरह से पीछे आ रहा है. जैसे इसको थोड़ा सा फ्लिप करके देखा हुआ. ठीक है, अब हम ये वाले का देख लेते हैं. ठीक है, जो हमने जो स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने इंक्लूड किया हुआ था इपॉक्साइड, इसको देख लेते हैं. ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास? इसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका तो हमारे पास ये है कि आप एक पहले प्लेन ड्रॉ कर लो, और ये क्योंकि हमारा इपॉक्साइड दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो आप इसको ऊपर की तरफ लिख लो. ठीक है, ऊपर की तरफ लिख लो, बिकॉज
टॉप व्यू, आप देख लीजिए, यू आर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, जस्ट इमेजिन व्यूइंग समथिंग फ्रॉम द टॉप, यू कैन क्लियरली सी दिस ऑक्सीजन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, ठीक है। अब हमारा टर्शियरी बुटाइल ग्रुप क्या है, 4th कार्बन पर है, सो हियर व्हाट वी हैव इज अ टर्शियरी बुटाइल एट 4 कार्बन। हम अगर ऊपर से क्लियरली देखेंगे तो हम ऊपर से देखें तो हमें पता है ये हाइड्रोजन नीचे जा रहा है एंड दिस इज कमिंग टुवर्ड्स अस, मीन्स दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, अगर हम ऊपर से देखेंगे। सो दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो दूसरा कन्फॉर्मर पॉसिबल है, उसका दूसरा कन्फॉर्मर आपका ये वाला भी पॉसिबल है। इस केस के अंदर भी आप देख सकते हो कि दिस इपॉक्साइड इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब मैं अगेन ऊपर से देख रहा हूँ एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें, हैविंग अ बल्की टर्शियरी बुटाइल ग्रुप एट द एक्सियल पोजीशन causes a lot of steric repulsions and it is not stable at all, or not stability, but it majorly it will exist in this particular, हमको पता है टर्शियरी बुटाइल ग्रुप, a bulky group prefers to stay at the equatorial position in order to avoid any interactions with the other functional groups, okay। इसका हम दूसरा देख लेते हैं अब एक और चीज़। अब इसको क्या हम सेम मॉलिक्यूल को किसी दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? अब ये क्लियरली आपके ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर आई हैव स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, आपके ऊपर है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यू कैन क्लियरली सी अगेन द टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इज एट 4th कार्बन इन दिस कन्फॉर्मर, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज इपॉक्साइड इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। सो जो दूसरा कन्फॉर्मर पॉसिबल है वो ये वाला कन्फॉर्मर पॉसिबल है। अब दोनों में से हमारा स्टेबल कौन सा हो, स्टेबल की मैं कह रहा हूँ कि मेजरली किस कन्फॉर्मर में एक्सिस्ट करेगा, इसमें करेगा, बिकॉज यहाँ पर टर्शियरी बुटाइल क्या है हमारा, इज इक्वेटोरियल एंड एट द सेम टाइम अगर मैं ऊपर से देखूँ तो दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ओके। सो आप ये भी ठीक है, हमारा ये भी ठीक है, आपको जो वहाँ से नंबरिंग कंफर्टेबल लगती है आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। केवल इसको अब कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डालिए से इपॉक्साइड लगा के एंड ट्राई एंड इमेजिन दोज थिंग्स, ठीक है। अब हम इसके बाकी स्टीरियो आइसोमर जो है ना दूसरे टाइप के, उनका भी देख लेते हैं कि कैसा, किस तरह, कौन सा मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर क्या है, हमारा इपॉक्साइड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। क्लियरली मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वाली नंबरिंग की है। सो व्हाट डू वी वांट, द टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। सो अगर इफ आई एम व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, आई कैन क्लियरली सी दिस इपॉक्साइड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड टर्शियरी बुटाइल इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। एंड इन द अदर कन्फॉर्मर जो इसका पॉसिबल है, इन दैट दिस इज द अदर कन्फॉर्मर, यहाँ पर एक्सियल पे है, तो इस वाले कन्फॉर्मर में दिस कैन बी एट द इक्वेटोरियल। सो आई कैन क्लियरली सी, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो दिस इज हाइड्रोजन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। सो इट इज दिस पर्टिकुलर कन्फॉर्मर इन विच इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। इसी तरह से बाकी दोनों का भी आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, इपॉक्साइड इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन and tertiary butyl group is coming out of the plane. These are the two conformer I can draw. Again मुझे ये देखना कि जिसके अंदर मेरा tertiary butyl group should be at the equatorial position, वही प्रेफर होगा। सो अगर मैं ऊपर से देखूँ, ऊपर से देखने क्लियरली पता चल रहा है, नाउ दिस इपॉक्साइड इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो इपॉक्साइड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मीन्स गोइंग बिहाइंड एंड एट द सेम टाइम tertiary butyl group is coming out of the plane, क्योंकि दिस इज बिलो। यहाँ पर tertiary butyl एक्सियल पोजीशन पे है, तो अगेन इट विल नॉट बी दी स्टेबल कन्फॉर्मर। इसको भी हम सेम तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बोथ आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन, सो दिस इज बिहाइंड द प्लेन एंड दिस इज द अदर कन्फॉर्मर। सो दिस इज द मेजर कन्फॉर्मर इन विच दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। अब ये तो बात हो गई इनका कन्फॉर्मर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और हम हाउ कैन वी सी इट। व्हाट अबाउट, अब इस कन्फॉर्मर को तो हमने सीख लिया, व्हाट अबाउट द ओपनिंग। लेट अस सपोज इफ आई कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर epoxide विद इफ आई सब्जेक्टेड टू द ट्रीटमेंट HCl और एप्पल रिएक्शन, ओपनिंग रीजियो सेलेक्टिविटी कैसे होगी ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देख लें, कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं पहले वाली ऊपर जो लिखी हुई हैं। अगर आपको ये और अच्छे से पढ़ना है, आई थिंक दीज आर टेकन फ्रॉम Claydon, so you can just see the exact 3 point there as well. So what it says is basically as long as आपका
इपॉक्साइड अनसब्स्टिट्यूटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, वो एक तरह से पूरे के पूरे इस कन्फर्मर को वो क्या कर देता है, कन्फर्मेशन रिजिड कर देता है, बिकॉज हमको पता है इट वुड प्रेफर टू स्टे एट दी टर्शियरी ब्यूटाइल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका स्टेबल कन्फर्मर ये है, सो इट विल प्रेफर टू स्टे एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज़ हमने जो बोली, ट्रांस-डाइएक्सियल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक दिस कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला जो कार्बन नंबर 2 और ऑक्सीजन के सिग्मा 4 ऑर्बिटल्स हैं जो, ठीक है, ये इन पे अटैक करेगा इन अ ट्रांस मैनर। ओके, ट्रांस मैनर पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप अच्छा होगा, इसीलिए, दैट इज़ द ओनली रीज़न। तीसरी चीज़, ठीक है, अगेन इट सेज दैट कि आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस केस के अंदर भी क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि इस केस में भी आपका ये जब एक तो अटैक यहाँ हुआ, दूसरा अटैक आपका यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों के केस के अंदर यहाँ पे भी आपको क्या है कि दोनों के दोनों ग्रुप, जैसे कि OH और क्लोराइड आप देख रहे हैं क्या है, एक्सियल हैं। यहाँ पे भी OH और क्लोराइड हमारे क्या है, एक्सियल हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, अब ये रिंग फ्लिप होके हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्लोराइड हमारा इक्वेटोरियल पे, OH हमारा इक्वेटोरियल पे है, जबकि यहाँ पर दोनों के दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पॉइंट इज अबाउट। इट सेज कि इन केसेस के अंदर इट इज़ नॉट दी स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। इन फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ दिस पर्टिकुलर बैरियर। ये जो बैरियर आपका होता है ना 50 to 25 किलो कैलोरीज किलो जूल पर मोल का, विच वेरीज फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, किसी केस में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी केस में कम भी हो सकता है। बट जब अटैक आपका ऐसे होगा और मॉलिक्यूल हैज़ टू गो थ्रू दिस स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल को ये एक्स्ट्रा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा बैरियर है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, नॉट द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि हमारे इस केस में क्या है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से कॉन्फर्मेशन लॉक हो गया है। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं होता तो यही हमारा शायद होता। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड दैट दिस इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, इट इज द बैरियर दैट मैटर्स, नॉट द स्टेबिलिटी। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या है कि जैसे कि मैंने बोला कि क्लोराइड यहाँ से अटैक कर रहा है, it is opening the ring, it is giving this particular compound in which both are anti-periplanar to each other, this will give this particular compound. लेकिन when the attack takes place from on carbon number 1, okay, it cannot directly give you this one because both are synclinal, they are not anti-periplanar. So इन दोनों को, दिस क्लोराइड माइनस और कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा 4 ऑर्बिटल, इन दोनों को एक दूसरे के अच्छे ओवरलैप होने के लिए द रिंग हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेन। उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी वो करनी पड़ती है, बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह का स्ट्रेन टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। और वो देन इट अंडरगोज रिंग फ्लिप टू गिव यू दिस पर्टिकुलर compound. So the reaction does not give you this product. So that is the result of which you do not get this product. Up now the same thing I have explained on the basis of the molecular models in a short video which you can watch it. उससे आपके I'm sure सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. Now just look at this video. So let's try and understand the Fürst-Plattner model with the help of the molecular models, and I can assure you, if you follow the molecular models which I'm going to explain, then you will clearly understand why when you carry out the reaction on this epoxide, why the regioselectivity is this, whereas if the epoxide is going behind the plane, why the regioselectivity is reversed. Okay, first of all, why this epoxide is written like that. Okay, then let us just try and understand this. Okay, so this is the molecular model of the starting material. Okay, as you can clearly see, okay, so this yellow here, I have taken it as a tertiary butyl group, and this red one is nothing but an epoxide oxygen. Now you can clearly see that tertiary butyl group is coming out of the plane, and here also this hydrogen, this is going behind the plane, and tertiary butyl group is coming out of the plane. And ये वाला कार्बन बॉन्ड मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है वाला, ठीक है ना, जस्ट आई विल शो यू वाई। और दिस epoxide is also coming out of the plane. Now अब मैं इसको आपको दूसरे कॉन्फर्मेशन में दिखाने की कोशिश करता हूँ. This is exactly how you can clearly see
कि ये कैसा लग रहा है। ये वाला जो पीछे जा रहा है ना, आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो पीछे वाला बॉन्ड जा रहा है ये वाला, यहाँ पर भी ये वाला बड़ा वाला बॉन्ड इसीलिए लिया ताकि आप क्लियरली समझ सको। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हमारा इपॉक्साइड, ये ऑक्सीजन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। और इसका जो दूसरा कॉन्फर्मेशन है वो क्या हो सकता था, लेट मी शो यू। अब इसको मैंने ऐसे दिखाया जो कि मैंने वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाया, ठीक है। अब दूसरे कॉन्फर्मेशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इट इज़ ऑन द एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन के अंदर हमें पता है कि it is not preferred having an axial group at the, having a tertiary butyl group at the axial position. That is why for this particular epoxide it is this conformation which is preferred. और इस conformation में हम देख सकते हैं यहाँ पे अब हाइड्रोजन आपका नीचे चला गया है, ठीक है, and this tertiary butyl group as I have shown is coming out of the plane. तो सेम मॉलिक्यूल है और ये वाला कन्फर्म हमारा प्रेफर्ड होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट-प्लैटनर रूल के अंदर हमने क्या कहा था कि क्लोराइड इज अटैकिंग दिस कार्बन नंबर 2। जैसे कि इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव क्लियरली सेड दैट फॉर द इपॉक्साइड फॉर्मेशन बोथ द ग्रुप मस्ट बी, मतलब O माइनस और X दे मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर। तो जब हमारा इपॉक्साइड ओपनिंग होगा तो भी द सेम फैक्टर इज गोइंग टू होल्ड ट्रू, ठीक है। अब जस्ट हम इसके देख लेते हैं सारे के बाकी फंक्शनल ग्रुप हमारे कहाँ के कैसे हैं, ठीक है। जस्ट आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे साइक्लोहेक्सेन कॉन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये ग्रुप इक्वेटोरियल है तो ये ग्रुप आपका एक्सियल है, अगर ये एक्सियल है तो ये वाला इक्वेटोरियल होता है, क्योंकि हमारा ये साइक्लोहेक्सेन डेराइव्ड सिस्टम है। इसीलिए आपका ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा दे विल बी actually not true axial position, so this will be called pseudo equatorial and this is called pseudo axial. Similarly ये वाला हमारा हाइड्रोजन is pseudo axial, this is pseudo equatorial. बट आप क्लियरली एक चीज देख सकते हो, अगर ये आपका ये हमारा टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल है, ये हाइड्रोजन हमारा एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये pseudo equatorial है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई भी ग्रुप आके अटैक करेगा, मतलब आपका मतलब ये हमारा शूडो एक्सियल है, अगर हमारा यहाँ से आके अटैक करेगा, इसको एक्चुअली नीचे से देखना तो थोड़ा बेटर रहेगा, इसको थोड़ा सा नीचे से अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। कितना मुश्किल होता है मॉलिक्यूलर मॉडल से समझाना। ओके, तो अब हम एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, दिस इज शूडो इक्वेटोरियल, दिस इज शूडो एक्सियल, ठीक है। अब हमारा और ये वाला हमारा क्या है, शूडो इक्वेटोरियल है, ये शूडो एक्सियल है। अब हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है क्लोराइड, और हमारा इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अब हम जैसे कि क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है दिस इज शूडो इक्वेटोरियल। तो अगर मतलब जब ये वाला हमारा क्लोराइड यहाँ से अटैक करेगा, दिस इज एक्चुअली दिस सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल इज एंटी पेरिप्लेनर टू दिस कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो मतलब ये अगर ये एक्सियल पोजीशन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन की हम देख सकते हैं ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है और ये शूडो इक्वेटोरियल है। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पर अटैक होगा, सो दिस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस इज परफेक्टली प्लेस्ड टू अटैक द एक्सियल पोजीशन। लेकिन जैसे कि अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा अटैक होने से क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये वाला हाइड्रोजन जैसे कि मैंने बोला इक्वेटोरियल है, दिस इज ऑलरेडी शूडो एक्सियल। तो इसका मतलब यहाँ पर ये शूडो एक्सियल पे तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यहाँ पे शूडो एक्सियल पे अटैक होने के लिए द मॉलिक्यूल हैज टू अंडरगो अ लॉट ऑफ स्ट्रेन। इसीलिए जो हमारा वो जो हाई एनर्जी कॉन्फॉर्मर हम दिखाते हैं जो कि हमारा ट्विस्ट बोट टाइप है, अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स को एंटी पेरिप्लेनर होना है तो मॉलिक्यूल हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन के वजह से वो वाला हमारा पाथवे हमारा प्रेफर नहीं होता। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। एक बार फिर से लेट मी जस्ट ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट। ओके, वी नो इन द केस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मर, ठीक है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मर वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ऑल द ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस हाइड्रोजन इज एक्सियल, the next one is equatorial, and if this is equatorial this is going to be axial. However, I said that the
the carbon that are attached next to the epoxide or the cyclohexene. Okay? So these hydrogens, these are not truly equatorial or truly axial, but after the ring opens, the pseudo-equatorial hydrogen is going to occupy the equatorial position, and pseudo-axial is going to occupy the axial position, that only after the ring opening. So let us just look at the arrangement of other functional groups. Okay? Other functional groups, what I have said that for this particular carbon to which carbon tertiary butyl group is attached, the hydrogen is the axial position. उसके पीछे वाला जो कार्बन हम देख रहे हैं, इससे attached, that hydrogen is equatorial. So this is equatorial, axial, this is pseudo-equatorial. So the attack here has to be axial. I hope it is a little clear now. It means that these orbitals are anti-periplanar to the carbon oxygen sigma star orbital, whereas if the attack takes place from this particular side, this hydrogen is already at the is already at the pseudo-axial position. So it means that this pseudo-axial attack is not preferred. Okay? Here in this case, the only attack that is preferred is from the equatorial position, and if the equatorial position attacks happens, both the orbitals, this carbon oxygen sigma star orbitals and this nucleophile sigma orbitals, they will be synclinal, they will not be anti-periplanar. ठीक है, तो इसी की वजह से it has to go through a high energy conformer. That is why it is not preferred. और जब आपका एक बार ये तभी हम बोलते हैं कि हमेशा जो that is why the Fürst-Plattner rule is called Trans-Diaxial rule. और इसको हमने क्लियरली क्या किया है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमने कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, सो आई होप आपका वो पूरा का पूरा डाउट 100% क्लियर हो गया होगा कि उस केस के अंदर ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ये आपका आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा. तो अब इसका हम दूसरा वाला केस ले लेते हैं. जब हमारी इन दोनों की ज़ीरो केमिस्ट्री रिवर्स हुई, देन द वाई द एडिशन इज अगेन. अब हमारा क्या हो रहा है, क्लोराइड का अटैक. जैसे कि ये तो हमको समझ आ गया कि मेजर कन्फर्मर हमारा यही है, क्योंकि टर्शियरी बुटाइल ग्रुप की वजह से कन्फर्मेशन लॉक हो जाता है. एंड the attack can only take place when this chloride minus sigma orbitals are anti-periplanar to carbon oxygen sigma star orbitals. ठीक है, दोनों के दोनों. और reaction, this पूरा का पूरा process is kinetically controlled, so it avoids this extra higher energy what you can say intermediate or transition state we should say. ठीक है, to give you this molecule. तो ये इस केस में नहीं बनता है. What we end up getting is exclusive with this, and this also has been beautifully explained with the help of the molecular model. You can just quickly watch the video just now. Just look at this. Now let's talk about the molecular model of this particular compound. We can clearly see the epoxide is going behind the plane and tertiary butyl is coming out of the plane, and this is the major conformer in which this particular compound would exist. And let us understand why. So first of all, this is the molecular model. Okay, so we can clearly see this tertiary butyl group is coming out of the plane and epoxide is going behind the plane. And now I'm going to just show you like this, so you can clearly see just the way this bond is going behind. This is exactly how it is going behind, and we can clearly see tertiary butyl group is going behind. This is how it has been shown. Okay, and this is nothing but this is pseudo-axial, this is pseudo-equatorial, this is pseudo-axial, pseudo-equatorial. Similarly, these are pseudo-equatorial, pseudo-axial, pseudo-equatorial, pseudo-axial. Okay, and in this case what we have said that the chloride attack this side, we will try and understand. लेकिन इससे पहले इसका दूसरा कन्फॉर्मर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट आपको ताकि समझ आ जाए कि ओके. सो दिस इज द अदर कन्फॉर्मर जो मैंने दिखाया है. इन दिस कन्फॉर्मर you can clearly see again. In this conformer as well, the tertiary butyl is coming out of the plane, epoxide is going behind the plane. ठीक है, but in this conformer you can see that tertiary butyl group is occupying the axial position. Being a bulky group, in this conformer it is not going to exist. So the major conformer in which is going to exist is this one. Look at this. See, that is the beauty of molecular model. We can virtually understand anything if we have the molecular models, and it makes the job of makes my job pretty easy. So let us just try and understand why the attack takes place at this site. Again, we have to apply the same concept. What we are saying that these chloride nucleophile sigma orbitals has to be anti-periplanar to this one. And how can that happen? Now again, this is equatorial position,
This is, again, let's just start from this side. So this is pseudo-axial, which on opening is going to become axial. This is equatorial, this is axial, this is equatorial. So it means this is going to be axial. So it means that these are perfectly placed to attack at this side from the axial position, and on the ring opening, the entire molecule is going to adopt the chair conformation, which drives itself towards the stability. Lekin, let us just try and see what happens if the attack takes place at this position. As we can clearly see that this is pseudo-equatorial, axial, equatorial, axial. Since this is axial position, so from here the axial attack is just not possible. It has to be equatorial. And when it attacks from the equatorial side, this nucleophile and this carbon, you can clearly see these are synclinal. These are not anti-periplanar. So again, in this case, the molecule has to go through the high energy conformer. So that is why the attack takes place here, not here. That is why the regioselectivity in this case is what you observe is this one. I hope आपको ये सारा समझ आया होगा, and you will find this video very, very useful. Or let us just take the other example. So now we come to a rule of thumb. ठीक है, जब भी, ठीक है, epoxide केवल जो मैं बोल रहा हूँ Trans-Diaxial attack is not only limited to the epoxide. ठीक है, कोई भी रिंग, any 6-membered ring which is not in the chair conformation, हमेशा axial attack is preferred. ठीक है, so what does that mean? It means we are talking about amines, we are talking about the halonium ions, we are talking about the epoxides, or we are talking about the simple alkenes, cyclohexene as well, because they are not in the perfect chair conformation. So if any 6-membered ring that is not in the chair conformer, axial attack is preferred. So just keep this thing in your mind. And when I say axial attack is preferred, it means you are talking about the Fürst-Plattner rule. Okay, now let's look at few of the examples. So here you can clearly see what I have taken, like 4 different examples. हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो एक आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. अगर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप और इपॉक्साइड दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है. स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम का मतलब मेरा है कि दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. Always remember the chloride will attack from this side. This is kind of a shortcut way to remember this. ठीक है, and अगर इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑल्टरनेट है, जैसे कि इस केस में इपॉक्साइड इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, टर्शियरी ब्यूटिल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, देन द क्लोराइड विल अटैक एट दिस साइड. ठीक है, जैसे कि दोनों के केस के अंदर हमारा हो रहा है. हियर बोथ ऑफ देम आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन, क्लोराइड ने फिर से हमारा अटैक कर दिया यहाँ पे. सो जस्ट दैट इज वन थिंग, something that you can remember. But again, the best thing is to just understand अपने दिमाग के अंदर molecular model से जो मैंने सिखाया कि the role of the molecular model is to make you guys understand something. आप में से there are a number of students who think, how can we use molecular model in the exams? They are not allowed. Guys, it is not. It is just for your understanding, so that at least in exam, if you see a question, you can at least draw it, some kind of a probable transition state and see where the attack can take place. Okay? That is why this video is all about understanding the concept. Okay. So similarly, if you have this type of cyclohexene structure and you do the reaction of MCPBA, with the MCPBA, this is the epoxide that you get, and if you just open the epoxide under acidic condition, this is the stereochemistry that you get. So what I told you guys, so this is very similar to this particular case, and if this is the case, then what did I told you, the attack always takes place from this one, is wale pe hua. As a result of this is the product. Same with the bromination, it goes via this halonium ion. This is a very interesting example. If you want to open the epoxide ring using methyl magnesium bromide, what do you mean? So since both of them are like on the same side, जैसे कि इस केस में था, so that it is regioselectively opening from this side. If they are opposite, it is going to open from this side. So again, if you draw the transition states from what I have told, अच्छे से समझ के, you will be able to crack these problems very, very easily, and these are very important examples. Okay.
Oh, so this is a very interesting example now. You can clearly see, so this is the major conformer in which it exists. So when the azide attacks this particular carbon, it is, this is actually the, this is actually the site where these are like having a good overlap. This is what has been said to give you this molecule. This can be rearranged to be written like this one. और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, epoxide को going behind the plane. अगर behind the plane this is the major conformer, उस केस में attack ये होता है, and this is what you get. So these two are absolutely important examples. And now just watch this video. I have explained this particular example, the top one, with the help of the molecular model. So why this is the major conformer? Just have a look at this video. So guys, let's talk about this particular example. So we have seen that how in this particular epoxide, this is the conformer and the attack takes place at this site to give this desired regioselectivity. Now again, we are going to follow the same process, try to understand this through molecular model. Okay, so here we go. So this is the molecular model. That is something that we do pretty easily. Now this one is nitrogen, this blue one, and this one I am representing as a phenyl group, and this is oxygen. Now since this is epoxide is coming out of the plane, phenyl is going behind the plane, and you can clearly see here as well, this phenyl is going behind the plane, this hydrogen is coming out of the plane, and the epoxide is also coming out of the plane. This is exactly what it is. Now what about the conformer? Okay, so this is the conformer in which it is going to exist. This is exactly how I have drawn it, so you can clearly see it. Okay, you can see that the phenyl is being shown to going behind the plane, and here the phenyl is also going behind the plane. Now why is this the major conformer? Let me just draw the other conformer. Okay, in the other conformer you can clearly see that this phenyl is now at the axial position. Now phenyl being a bulky group at axial position is not preferred because of the sterics. Okay, so that is why the major conformer is this one. Okay, in which the methyl is at the equatorial position. Now when the methyl is at the equatorial position, as I have previously said that in the case of, since this is right now, this is not the chair conformer, but once the attack takes place, all of this is going to get into the perfect chair conformer, and the attack is going to take place from the in the trans-axial manner. Okay, so the product that we are going to get is the trans, where both these groups are going to be trans to each other, that is anti-periplanar to each other. Now let us just try and look at the functional group that are present here. This phenyl is, we can see this phenyl is equatorial, and this hydrogen is pseudoaxial. So if this is pseudoaxial, it means the next hydrogen here, since we are talking about alternate conformation, this is one of the easiest way to explain this. As I have already said, this is one of the easiest way to explain the trans-diaxial effect. Now this is equatorial, axial. So here the only way the attack can take place, that azide can only approach from the equatorial position. Okay, whereas if the equatorial attack takes place, then what happens? This carbon oxygen sigma star orbitals are not anti-periplanar. But now let us just look at the arrangement on this side. So this is axial. So what I said, this is axial, and this should be equatorial. If this is equatorial, this is axial, and this is again is going to be the equatorial one. So if this is pseudo-equatorial, it means the substitution in this position has to be axial. So when the azide attacks from this particular side, so this is perfectly anti-periplanar to the sigma star pi orbital. That is why the azide attacks here to give you this particular conformer, and this can be written in the chair form. In the chair form it can be written like that, and in the normal structure this is how we represent it. Now as I've clearly told you previously, that it is about the stability. It is not about the stability of the product, but जैसे कि if the azide attacks here from the equatorial side, this might also end up being on the equatorial side. So it is not the stability of the final product, but the intermediate actually, but the energy barrier that the molecule has to go through. क्योंकि अगर इसको एक्शियल अटैक करना है, तो जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि it has to go through a high energy twisted conformation, which is kind of a twist board जो इस तरह का होता है.
हमारा इस तरह का, आई एम जस्ट काइंड ऑफ ड्राइंग बहुत रफली। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि इसका मॉलिक्यूलर मॉडल से, ठीक है। I'm sure this video was of good help for you guys. Now let us look at another example. ये वाला एग्जाम्पल एक्चुअली क्लेडन में से है एंड उस केस के अंदर हम क्लियरली देखते हैं कि हमारा ब्रोमाइड आयन, ठीक है, दिस इज द lactone epoxide. The bromide ion exclusively attacks at this particular carbon to give you this trans-diaxial opening, and this is the desired product that you get. So this is yet another good example of Fürst-Plattner Rule or trans-diaxial opening. So अब यही example I have again explained this you with the help of the molecular model. Again, please have a look at this particular video. I'm sure आपको समझ आ जाएगा how does this lactone moiety locks the conformation, completely locks, and making this bromide attack exclusively from this side. Have a look at this video. Now let us look at the other example. Now here we can clearly see here what we have is this lactone which is coming out of the plane, epoxide is behind the plane, and here what we have is a methyl group. So here in this case, when the bromide ion, okay, when the bromide ion is attacking, it is preferably attacking from this side. Why is that? Okay, again we will try to understand this with the help of the molecular model. Now this looks a little difficult, but we will try to understand the molecular model. Okay, let me just draw it like that. Now see, okay, so this is the oxygen. Okay, so this oxygen is the oxygen of the this one lactone, and this is carbon. Okay, this is carbon, this is the carbonyl, and to this we can see a methyl group here. So this is just, let me twist to show you, this is the methyl here. Okay, and then this epoxide is going behind the plane, epoxide is going behind the plane. This is perfectly fine. Now as a result of this particular lactone, this entire conformation is kind of a locked. अब हम इसको ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अटैक यहाँ पर क्यों हो रहा है, ठीक है। इस कॉन्फर्मेशन के अंदर जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस मिथाइल इज एट, ओके, सो लेट मी शो यू लाइक दैट, दिस मिथाइल इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे कि मैंने अल्टरनेट कॉन्फर्मेशन की बात करी है, जैसे बड़ा वाला बिग ग्रुप है, दिस इज एक्सियल, this is equatorial, so it means it is only this side, this मतलब whenever bromide ion attacks from this side, this is kind of a anti-periplanar to the carbon oxygen sigma star orbitus. यहाँ से देखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ है हमारा, एक्सियल है, दिस इज एक्सियल, सो इट मीन्स यहाँ पर द ओनली वे द अटैक कैन टेक्स प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटोरियल पोजीशन, वेयर एस अगर इक्वेटोरियल पोजीशन होगा दिस हैज टू गो थ्रू अ हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, जबकि इस केस के अंदर वो पॉसिबल है ही नहीं। दैट इज वाई इस केस में एक्सक्लूसिवली आपका अटैक इसी साइड से होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा वाई द प्रोडक्ट इज दिस वन, ठीक है। अब जब ब्रोमाइड आयन ऊपर से अटैक करेगा, अब ऊपर से अटैक करेगा तो मैं ऐसे देखने की कोशिश करूंगा तो ब्रोमाइड विल कम आउट ऑफ द प्लेन एंड OH विल गो बिहाइंड द प्लेन। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट example, ठीक है। I hope you are able to understand this now. So I hope it was very useful. आपको समझ आ रहा होगा। और so these are the two important examples. अब here the important thing to understand here now, अब तक जो मैंने example discuss किए हैं, we have seen the substitution is mostly on these carbon. What about when you have functional groups at such carbons? इस केस के अंदर भी आपका ट्रांस डाइएक्सियल इफेक्ट प्रिडोमिनेंट करेगा। अगर आपका इपॉक्साइड ये है, दिस वुड बी द रिजियो सेलेक्टिविटी, इफ इट इज दिस इपॉक्साइड, रिजियो सेलेक्टिविटी वुड बी दिस। अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट ड्रॉ द कन्फॉर्मर। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के दो कन्फॉर्मर पॉसिबल हैं, ठीक है। इपॉक्साइड इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन एंड मिथाइल इज ऑल्सो गोइंग बिहाइंड द प्लेन। इट मीन्स जो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3, पोजीशन नंबर 3 पे है। मतलब ये मिथाइल या तो शूडो एक्सियल हो सकता है, ठीक है, या तो शूडो एक्सियल या शूडो इक्वेटोरियल हो सकता है, ठीक है। कौन सा प्रेफर करेगा आपको पता है, जैसे जो मैंने अब तक सिखाया, दिस विल ऑब्वियसली प्रेफर टू बी एट द शूडो इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आप ऊपर से इसको देखें, इपॉक्साइड इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन एंड दिस मिथाइल इज ऑल्सो गोइंग बिहाइंड द प्लेन, and this chloride preferably attacks from carbon number 1 to give you this particular desired product. And again, this example I have explained on with the help of the molecular model. Please have a look at the video. I'm sure your doubts are going to be
absolutely fine. Okay, just have a look. Now let us just try and look at this particular example in which instead of having a functional butyl group at these position, what happens when we have any group at this position. So this is on such system, जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर है, this is the product that we observe after treatment with HCl. And why the regioselectivity is this? Again, this can be also explained on the basis of the Fürst-Plattner rule. So first of all, we will look at the 3D model, as I said, which makes the job pretty easy. So we can clearly see the methyl is going behind the plane and it is on carbon number 3. This is carbon 1, 2, 3. So it is going behind the plane. So this is the methyl. You can see carbon having 3 hydrogen. This is going behind the plane. Hydrogen is coming out of the plane and oxygen is going behind the plane. Okay? This is a simple molecular model. Now let us just try and look at the conformer. So as you can clearly see, I have clearly drawn this conformer where the bond is going like that. And you have the oxygen here, and this is the CH3, which is clearly you can see occupying the pseudo-equatorial position. This is pseudo-axial position. Now, what is the other conformer that is possible for this one? The other conformer that was possible. So in the other conformer, you can clearly see that this methyl group is occupying the pseudo-axial position, and it is going, the bond is going like that. And I have clearly mentioned that this is not the preferred conformer because methyl group is at the pseudo-axial position. Okay, so it will prefer to stay at the pseudo-equatorial position. Up clearly you can see when I'm moving the bonds, the other bonds are already moving in different direction. Okay, so when I move the bond, they clearly adopt this particular conformer which I have said. Now, just like previously in which I try and explain, the chloride ion has to be anti-periplanar to this carbon oxygen sigma star orbitals. Now just again very simplistic approach which I use is this hydrogen is equatorial, this is axial, this is pseudo-equatorial. So it means this particular nuclear, when it attacks on this side, you can clearly see chloride is attacking this carbon. So the chloride is perfectly placed to attack this side, and it is anti-periplanar to this carbon oxygen sigma star orbitals. Now that is why it attacks this side, and this is the regioselectivity we observe. Now why it doesn't attack here? Because this is pseudo-equatorial, this is axial. So when I am counting these, what do I mean? I mean that on the alternative carbons, so these functional groups are opposites. If this is pseudo-equatorial, this has to be axial. If this is axial, this has to be equatorial. If this is equatorial, this has to be axial. So if this is axial, this has to be equatorial. Means even if the attack will take place, or even if the functional group is there, it has to be axial in order to adopt the chair conformation, because that is what we are thriving for. So since this is already pseudo-axial, so the attack can only occur from the equatorial position, and if it has to occur from the axial position, the molecule has to go through the high energy strain conformation. Okay, so that is why we observe the stereochemistry or regioselectivity, I should say, this one rather than the reverse. I hope you are able to understand this Fürst-Plattner rule with the help of the model much easily. So this is the another example. What we have is an epoxide ester. It is treated with triethylamine HF. So here fluoride is acting as a nucleophile, and it is preferably opening from this side. As I have said, अगर आपकी stereochemistry दोनों की same है, यहाँ से open होगा. अगर opposite है, it will open from this side for it. So this is also very good example. And this, I think I've already taken this particular example. Okay, dibromination. So this is in this case what happened is, what we are getting is the bromohydrin product. Same फंडा है, ठीक है. आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा आपका, इन विच द ब्रोमो इज गोइंग बिलो द प्लेन, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ मिथाइल ग्रुप टॉप पर है. सो नीचे से होता है, उसका जब OH अटैक करते हैं, OH आपको इसमें ऐड करते हैं, यहाँ से अटैक करता है, इसको दूसरी तरह से हम इस तरह से आराम से उसको लिख सकते हैं. सो दिस इज द ब्रोमोहाइड्रिन यू गेट. अगेन पूरा का पूरा अगर आप उसका पढ़ेंगे तो ब्रोमियम एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज ब्रोमियन, इज टू द लिस्ट हिंडर्ड फेज. लिस्ट हिंडर्ड फेज मतलब कौन सा? अल्फा फेज, ठीक है. अल्फा फेज मतलब नीचे से आपका होगा. एंड एंटी पेरिप्लेनर एंटी पैरेलल ओपनिंग ऑफ रिजल्टेंट ब्रोमीन आयन, मतलब आपका क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है, इसीलिए ब्रोमाइड आपका OH ने यहाँ अटैक किया, ये आपका ओपन हो गया टू गिव यू दिस पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट.
और इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है इस पूरे के पूरे वीडियो का, इट इज़ दिस एग्जाम्पल। अगेन MCPBA से आपने इसको ट्रीट किया तो MCPBA सबसे पहले क्या इपॉक्सीडेशन क्या हो रहा है, अल्फा फेज से हो रहा है, ठीक है। दिस इज अल्फा इपॉक्साइड मीन्स मिथाइल ग्रुप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, सो द इपॉक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम बिलो द प्लेन। नाउ व्हेन यू ऐड द सोडियम methoxide in this one, and by the way this example has been taken from the Zufil book, so if you have any doubt you can just follow that book, okay. Now there are two ways in which the epoxide opening can take place, from C4 and C3. So it clearly says that from C3 when the opening takes place, it has to go through this high energy conformer, okay, which the reaction does not prefer. So that's as a result of which this does not form. Whereas this methoxide ion, it is perfectly placed to attack C4 position to give you the trans-diaxial product. So here you can clearly see. So it attacks because of the very good orbital overlap to give you this compound B. So this can also be written like that. So क्योंकि बुक के अंदर आपको ये ऐसे करके लिखा हुआ था तो मैंने इसको कन्वर्ट करके इस तरह से लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे और एग्जाम में समझ आ जाए। ऑल द एग्जाम्पल आई हैव इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I have tried my best to explain this phenomena या ट्रांसडैक्शियल इफेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. और मुझे लगता है अभी भी देर मस्ट हैव बीन देर आर नंबर ऑफ डाउट्स दैट यू गाइज मस्ट बी हैविंग. सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू लेट मी नो, ओके. आई वुड ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. अगर मुझे आपको लगा कि कोई डाउट है आपको तो डू शेयर इट विद मी, ओके, एंड सेंड मी योर कमेंट्स एंड लेट मी नो whether you like this video or not, okay. So thanks a lot for watching the video. Have a very very good day and take care of yourself. Bye.